Hi everyone. So welcome to today's live. As promised, we are trying to do live almost every week, and a lot of you have told us that you like our, YouTube, Facebook live. It gives you more space to watch videos and all that. So we are kind of experimenting and seeing if Instagram works better for you all, if YouTube, Facebook works better for you all, and all that. So today we are going to do live where there are going to be two people. So this is also first time that we are doing. So it's going to be me and Anamika who are going to do live together. And I'm also going to be your host. Come, I'll take a simple project and do it along with Anamika, just so that we can see how it goes and all that. And as always, we are live on all our YouTube channel, which is HNDMD and Khyati Kothari. And on Facebook, we are live on CrafTangles and HNDMD. I know today is a long weekend, so a lot of you may or may not come. So I'm hoping that you join us. We have some interesting ideas, but if not, you can always watch our replay. And before I, get into the project and all that, and we start, I just wanted to remind you that our freedom sale is on. So our new Independence Day sale, I think it's ending soon. So in case you are interested, do check that out. I think a day or two and it will end. So do check that out. And yeah, I will just add Anamika into the video so that we can start working. So I'll just start setting up my desk and everything. So just give me a moment. Just a minute, guys. Okay. Okay. So now the setup is done. Anamika, you are also live. Yeah, hi, Khyati. Hello, hello, and you're audible. Hopefully, I'm also audible. And if you want to start, just give a small intro on what you are doing, and then I'll do a small intro on what I am doing, and then we can take it from there. Yeah, so we have already discussed, we are going to use the same decoupage paper Yeah, napkin. and napkin, sorry, napkin. And I am planning to make a kitchen themed, you know, uh, decorative item. Let's see if I can turn it into something decorative or useful. So I haven't planned it yet, but I have done a little bit of homework because, Mm, like everyone knows, with the clay work has to be dry. So I've yeah, basically put clay work here, here, and here. Okay, okay, that's it. Nothing else. And now I'm going to start. right. So for people's reference, if you could let us know, what mold, what clay, Yeah, etc., because I'll I just know show that you the people. mold. So this is the mold which I used. So I have Okay, used this particular thing, and I have used shilpkar, normal shilpkar. Shilpkar clay. So that's Yeah, epoxy base, right? yeah, Adding, mixing, and making it. this thing. Fevical. Yeah, Yeah, molded. yeah, molded. So for those of you who are wondering, we do sell the molds as well as molded. Molded is back in stock on our website, so you can check that out. Hello, Pradnya, and I know a lot of people are there over the long weekend, So those of you who are joining in, thank you for joining in. Sarange. So yeah, now that you Anamika gave you an idea, I'll also give you an idea of what I am doing. So as discussed, both of us are using the same napkin. The napkin is called as Kitchen 2. The code is CTT NPA4 number 52. Okay. And both of us are going to use this for our ideas. She's going to make a decoupage project because she's a decoupage queen. And today I thought I'll attempt journaling because, I also have to look at the chat, and also I wanted to do something which is in my comfort zone. And I also, like, Anamika, she's like a Rajdhani. So if I'll do a decoupage along with her, I don't think I can match her speed. So I thought, I'll do something simple, or journaling is right in my alley. And I thought आपको दो तरीके से दिखेगा भी कि how you can, expand napkins, use it on paper, mixed media, etc. So I think हमने journaling बहुत कम किया है napkins में. So I thought हम वो करेंगे आज. So this is what I am also doing. So I'm going to use these two pattern from the napkin. Okay, so Khyati, which one do you want me to pick up? You want me to pick up this or you want me to pick up this?
I'm going to use that actually, the one which is there on your board right now. So if you want to ये take वाला? the, yeah, थोड़ा variety हो जाएगा और कुछ नहीं. ठीक है, done. So I'm taking this. Okay. Uh, zoom out. Should I zoom out a little? I'll just zoom out my camera a little bit ताकि आप आजू बाजू का भी थोड़ा दिख सको. I'm just taking a little bit of water and tearing down my napkin. And I am looking at chat. थोड़ा intermittent होगा because I am also making a project simultaneously. So please bear people. So I'm going to start with prepping the all the elements with dark brown first. Okay. So rather than gesso, you are directly using chalk paint. Yeah, chalk paint, or Okay. you can mix acrylic paint. I have mixed a little bit of burnt sienna and Okay. the chocolate syrup. Okay. You can use chocolate syrup directly also. I wanted a darker shade, so I have used some darker shades of acrylic paint. Right. Fair enough. Fair enough. मुझे पता है आपका burnt sienna कितना favorite color है. So now that I have prepared my napkin, so my idea is कि मुझे ऐसे layout बनाना है, scene बनाना है on top of my page. So this is an A5 diary, by the way. These are our CrafTangles diaries, which I always use for journaling. So my idea is to create a layout like this and then we'll do something in background. Okay, so before I do that, as you see, यहाँ पे काफी कुछ brown है. So to continue that, पहले मैं एक lower layer of brown liquid acrylics करूँगी. So I'm going to use liquid acrylics. So the color that I'm using is burnt sienna liquid acrylics. So now that I have an idea of where my things are going to go, I'm just putting a little bit of water to wet my paper. Now remember, ये paper पे मैंने gesso जिसो कुछ भी नहीं किया है. So it may not take paint as well as, you know, gessoed surface, but it works. I have already, you know, done napkins and transfers on top of this paper, particular जो हमारा diary है, and I have had no complaints. So I tend to, you know, use directly. But अगर आपका paper ऐसा है जो water वगैरह नहीं लेता है, तो doing a gesso is always better, or use watercolor paper, whatever, you know, works for you. Okay. And then I will dry this. I have purposely left this part without any color because I know I'm going to put my paper at the center. So as it is, I'm going to put in my gesso. Right. Right. Now remember, our napkins are so thin that they follow the same concept as your decoupage napkin. तो आप इनके पीछे dark background लगाओगे तो डिजाइन छुपने लगेगा. So that is always advisable to work with a white background or a lighter background. So here is what I'm going to apply my napkin. So my napkin, for applying my napkin, I'm going to use decoupage glue. And I have taken a very wet brush क्योंकि मुझे थोड़ा अपना glue dilute करना है.
Those of you who are joining, please do pop up and say hi. We would love to hear what you want to say, or any queries you have. Now you have seen me do my folder method and all that. Hello कविता. But आज हम क्या करेंगे? आज हम अनामिका की तरह सीधा लगाएंगे. Because this is journaling, so I'm not worried a lot about adding wrinkles and stuff. So here is where you can experiment with various techniques, etc. Because the worst case scenario is कि आपका layout खराब होगा. You are not damaging the entire project. So here I'm going to show कि आप सीधा कैसे लगा सकते हो directly without any issue. तो मेरा तरीका है कि मैं इसको सेंटर में दबाती हूँ. Like this is the center. So I just use my finger in the center. Then I take the same brush. I have removed all the glue and I am just taking it from the center and going outwards. Now remember, with journaling, I don't care about wrinkles and all that much. But agar aapko wrinkles वगैरह का you are very particular, then you can, do the folder method also. And again, this method will also come, but with practice. मेरा अगर आप देखोगे तो wrinkles आए हैं, but I find it very cool in journaling, so I am okay. Uh, yes, today we are not on Instagram, guys. We are on YouTube. A lot of you have demanded कि YouTube, Facebook पे अच्छे से दिखता है. And आज भी हम दो लोग कर रहे हैं. So that will not work out on Instagram for sure. आपको एक जन का तो स्क्रीन नहीं दिखेगा. Hi Nadia, hi Monalisa, hello कविता. Instagram चलो good good. यहाँ पे आ गए लोग. So we are using, our idea is to use one na kitchen wala napkin, which is called Kitchen 2. And our idea is to make something with it. So Anamika is making a decoupage kitchen themed home decor project. Chopping board, I think. Chopping board Yeah, nahi. Chopping it board hai is na? sort of, yeah. It's like a frame jaisa. Yeah, yeah, yeah. एंड आई एम डूइंग अ जर्नलिंग क्योंकि मुझे पता है कि मैं अनामिका की स्पीड के साथ नहीं मैच कर पाऊंगी तो मैंने बोला यार आई माय कंफर्ट जोन क्योंकि मुझे वरना 1 घंटे की जगह 1.5 घंटा लग जाना है और आप बोलोगे यार ये कब खत्म करेगी सो नहीं दैट्स नहीं, व्हाई क्या पता आज मेरा ही लेट हो जाए ख्याति। नहीं नहीं मैंने उसके लिए भी अपना सेकंड जर्नल पेज रेडी रखा है इन केस इट गोज लॉन्गर क्योंकि जर्नल पेज का क्या भरोसा नहीं है कभी 15 मिनट में भी हो सकता है कभी 1 घंटा भी लगता है डिपेंड्स आप कितना डिटेलिंग कर रहे हो So we are bottom line doing something kitchen related. वैसा ठीक है तो अभी you can see my lower layer is already quite merged because of the brown that I have added, right? तो अभी मैं इसको और merge कर रही हूँ with the liquid acrylics. Now remember our liquid acrylics are transparent pigments or translucent at the best. So they are very good to give that watercolor effect, but something which is permanent. तो अगर आपको अपने नैपकिन में वाटर कलर इफेक्ट देना हो जैसे कि अभी आप देखोगे मैं मर्ज करने लगी हूँ तो दिस विल ऑलवेज वर्क विथ योर एडवांटेज अनामिका मैम इज यूजिंग जेसो इज अनामिका मैम यूजिंग जेसो यस अनामिका मैम ने सेंटर में जेसो यूज किया था बट Yeah, आई yeah, थिंक शी yeah. It's कवर्ड इट all gesso. या You can also use white chalk paints if you want. हाँ सो दिस इज ब्राउन चॉक पेंट के ऊपर व्हाइट जेसो दैट यू हैव डन फिर आप थोड़ा वो डिस्ट्रेसिंग करोगे आई थिंक Yeah. Now I'm going to take out this patch.
Hello, Kosha. I think she's your friend. She says hello, Anamika. Hello, Vinay Uh, Kaur. okay, what's her name? I Hey, she said hello to me. I think so sweet. Personalized hello बहुत कम मिलता है. So I thought okay. that I think she's another follower. Hello, Kosha. He said hi to both of us. So sweet. Personalized hello and hi. Okay. So okay, बच गया. So now I'm going to paste it with the help of the decoupage glue. So now there are many ways to go about it. अगर आपको background में, this also looks nice. If you don't want to do anything on top of it, this has actually created the whole kitchen scene. But what I was thinking is मुझे ऐसा faux brick look चाहिए था, brick वाला जो आता है वो. So I'm going to try it freehand. Normally, if you see, I'll show you one of my previous page where I'm yet to post the reel for this. But this is where I have used a stencil. तो आप ऐसा हमारी craft angles brick stencil आती है, so you could use that also to kind of create the whole faux brick to wall effect. But today I thought let's try freehand and see how it works. Oh, Kuheli, yes, hello Kuheli. Okay, Kosha, मतलब I did not know Kosha. Okay, hello, hello, hello. Thank you, Pradnya. Yeah, kitchen theme. Actually, last time even I think Paro and Sneha were also planning to do kitchen, but फिर end में उन्होंने ballet decide किया. तो वरना हम लोग का kitchen शायद back to back हो जाता दो kitchen. And I really love the print in this napkin. So now what I'm doing is I'm using some red paprika. This is CrafTangles liquid watercolors, and we are going to create the whole faux brick effect. Okay. So for me, now my Hmm. theme is mostly in blues and browns. Hmm. Okay, so I'm going to make or merge likewise. Okay, so I'm Okay. going to take, I don't know which all colors, but let me just take the shades of blue now. No, Okay. this one, the Bohemian blue, that is my favorite, vintage Yes. blue, and mint to be. So these are the Right. three shades with which I'm going to work now. Okay. So primarily blues. Yeah. Now, before that, I'm going to give it a hint of brown again. So I'm going to take my chocolate syrup and थोड़ा सा इसमें शेडिंग करूंगी. Okay. Now, it is quite a mellowed down wala brown, not very too heavy. Make sure Hmm. I'm going to take out the extra ones. Okay. Kuheli is the Bengali name for mist. Interesting. I did not know that. So I'll be starting with a darker shade of blue and then going towards the light. Okay.
So one, yeah, one decoupage come mixed media kind of a piece for kitchen, and one journal staying in one's own comfort zones. Parvati, yes. But this is the first time like I'm trying both hosting and like two people live with Anamika. So I thought let us stick to what we are good at. जो हम शायद नींद में भी कर ले. But if you like this format, guys, do let us know. We will, get more of this format. It is always, we would always like to know कि आप लोग को ज़्यादा Instagram पसंद है या क्या पसंद है. इसीलिए हम actually दोनों kind of we try and do one each always क्योंकि we want to see what you like. So we are always interested in knowing what feels better for you in terms of. Yeah, I am using liquid acrylics. So this is the liquid acrylics that I used for the brown. And now here I am using watercolors. So this is the red paprika color that I am using to create this faux brick look. Vinay, Kaur, yes. यस यस थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रज्ञा एक्चुअली ये मेरे दिमाग में कब से था आई वांटेड टू ट्राई आउट लाइक अ फो काइंड ऑफ अ थिंग एज आई सेड मैंने स्टेंसिलिंग से किया है बट दैट इज टू परफेक्शनिस्ट काइंड ऑफ इट्स नॉट आर्टिस्टिक सो आई थॉट आज हम फ्री हैंड करेंगे थोड़ा तो हम ये ब्राउन कलर से थोड़ा सा फोम पे टैप टैप कर रहे हैं अनामिका टू काइंड ऑफ की कॉर्नर्स Yeah, कर रहे हैं now I'm using blue, Bohemian blue. ओके ओके Yeah, सो कमिंग फ्रॉम द कॉर्नर्स एंड ब्लेंडिंग द नैपकिन yeah. ओके हाँ नहीं नहीं तो अभी मैं इसको टोन डाउन करूंगी नाउ दिस विल प्रोबेबली बी अ मिस और अ हिट लेट्स सी बट आई वांट टू एक्सपेरिमेंट तो अभी आप देखोगे कि पीछे का ब्राउन जो मैंने किया पूरा लिक्विड एक्रिलिक था तो लिक्विड एक्रिलिक व्हेन ड्राइज इज परमानेंट बिकॉज इट इज एक्रिलिक पेंट एट द एंड ऑफ द डे राइट अभी ये जो मैंने ऊपर रेड किया है ये वाटर कलर है तो वाटर कलर इज ऑलवेज रिएक्टिव विथ वाटर तो अभी आप देखोगे फिर भी एज कंपेयर टू दिस आई वांट अ मोर वाटर कलर लुक और ये बात बहुत वेल डिफाइंड लाइंस है इवन दो दे आर वेवी एंड ऑल दैट सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक अ वेट ब्रश और मैं ये सब ऐसे ब्लर कर दूंगी नाउ इट मे वर्क इट मे नॉट वर्क सो वी विल ट्राई एंड सी तो चलो कुछ नया करते हैं तो यू कैन राइट ऑफ द बैट सी दैट वो ब्लर होने लग गया लाइंस and I'll take a tissue and take away extras. So you can see color pick होने लग गया. And Anamika ma'am, I was going to do a key holder today, so this is a good idea to do clay work on it. Thanks for the idea, Pradnya says. So wherever you feel that you are going too dark with your color, you can always add some white and tone it down. Okay. So like here, I have Hmm.
use a little more of blue. So I'm going to tone it down with my white now. Right. So tips and tricks of blending. So now you can see ये पूरा aged हो गया है, काफी aged look हो गया है. And remember, ये paper को हमने gesso नहीं किया था, so this is all without gesso. If you do gesso, then you'll be able to remove more red color. Like here, I have removed very less color क्योंकि the paper also soaks in a little bit of color because this is not gessoed paper and this is not watercolor paper. If you were using a watercolor paper or you are using a gesso, it would have kept the paint on the top. तो आपको रिमूवल बहुत इजी हो जाता, but I wanted it to soak in, so इसीलिए मैंने नहीं किया. So now I'm going to start layering things on top of it. So abhi either I want to keep this flat and then if I have time, I'll do something here or wo hum layered karenge. This I'm going to keep flat. So my idea is that I want to use one of these girls for a sticker here. And uske साथ I was thinking, since this has blue, mint and pink, I could use these frames as a backdrop to kind of bring the girl in the front. ये vintage ही भी है, so this will fit right into our scene. ठीक है? So those of you who want to know, this is vintage portraits to sticker roll. So our sticker roll में ऐसे stickers के पूरे roll आते हैं. So this is one such sheet from the roll. And I'm going to remove this character from the center. Yes, not. So adding some more vintagey kind of a feel. So I'm adding more browns now. Okay. From the corners. Nice. Thank you, Kavita. Thank you so much. Now, this is my new obsession, using napkins to create scenes in my diary. And then these are our pre-cut stickers. The one that I'm using is called Fashion People.
So, since the background is so colorful, I wanted to go with a subtle colored girl, but one who is holding some kitchen items. So, isme coffee holding girls hai. So, I decided I'll use those. Now, there are a lot of options. I think between these two sheets, you have quite a few options of neutrals. So, I was thinking, hmm, black will be too much. I'll go with brown. I'm just looking at other sheets also. I think I'll make it Thor. So recut for you. हाँ वो दूर लग रहा है ना एक्चुअली वो है ना हम लोग ने सोचा अनफॉर्चुनेटली वो जूम नहीं होगा अनामिका आर यू एबल टू ब्रिंग द कैमरा डाउन बाय एनी चांस नहीं। नहीं है वो उन्होंने एक्चुअली इंस्टाग्राम के हिसाब से थोड़ा सेटअप है तो वी आर ऑल्सो लर्निंग हम्म। नेक्स्ट टाइम वी विल बी बेटर इसमें जूम नहीं होता है, दैट इज द हाँ प्रॉब्लम। इसमें जूम नहीं होता इंस्टा है में ये हाँ ही एकदम सामने आ जाता है, करेक्ट सेम करेक्ट सेटअप। इनफैक्ट आई हैव लोअर्ड द कैमरा, देन आल्सो इट इज नॉट वर्किंग। राइट राइट मैं मतलब वही बोल इतना रहा लो था है कि दोनों मैं अलग खुद भी तरीके हैं अपने काम को उतना क्लियरली देख नहीं पा रही हूँ। इट इज राइट इन फ्रंट ऑफ द ये, बट पता नहीं इसमें वो नहीं हो रहा। हाँ, नहीं नेक्स्ट टाइम आपको शायद वो सेटअप का वो थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ मे बी करना आई पड़ेगा। जस्ट लिफ्ट दिस अप। हाँ, probably on a stool or something. या आई हैव टू लिफ्ट दिस अप। Yeah. ओके, नाउ आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट डन एक्चुअली। Oh my God. That's called pressure now. नहीं नहीं नहीं, आप आराम से करो, मैं थोड़ा सा और इसमें वो करूंगी, डोंट वरी। मैंने इधर ओवर एम्बिशियस होके सेकंड पेज के लिए भी चीजें रेडी की थी। अरे फर्स्ट नहीं हो नहीं रहा है। नहीं, ऐसा Yeah. नहीं है। Probably after every step अनामिका can bring it closer तो लोगों को शायद दिख जाए वैसा। The piece अनामिका। सॉरी सॉरी ख्याति। यू कुड प्रोबेबली ब्रिंग इट आफ्टर आपका ब्लेंडिंग हो जाए तो एक बार दिखाने के लिए हाँ हाँ अभी आई नीड अ स्क्रैप पेपर scrap paper. So what I'm doing is some second generation stamping. I'm using this checkered stamp set and I'm inking it with Versafine Onyx Black ink. This is waterproof ink. And then I'm going to remove the first generation somewhere. So because I don't want such dark stamping. And then I'm not going to put a lot of pressure, सिर्फ हल्के हाथ से, and it gives this faded look. Okay. So very light, subtle stamping if you want. This is a good way. Thank you, Paper Petals. So you can enlarge your screen and zoom in, guys, in case you want to see certain section that is working for Paper Petals. So now that मेरा लड़की भी हो गया बैकग्राउंड भी हो गया अभी मैं इसका आई एम नॉट गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स आई एम गोइंग टू जस्ट add stickers I think I'll add in the end if I'm able to kind of add one more page here मैं फटाफट कर दूंगी और बाद में मैं stickers add करूंगी stickers I have very fun stickers planned so abhi as Anamika said my idea is to use kitchen theme so this was using napkin so what I wanted to show you with this live is कि ये नैपकिन को आप पेपर पे यूज कर सकते हो ये नैपकिन को आप एमडीएफ पे यूज कर सकते हो ये नैपकिन को आप एक्रिलिक पे यूज कर सकते हो नैपकिन को आप ग्लास पे यूज कर सकते हो नैपकिन को आप कैनवस पे यूज कर सकते हो so there is no limitation to where you can use these napkins it depends on what glue you have
Here I have used it on paper. And if you see my first live, I have shown you on almost all the mediums, including now we also have a live on candles and all those things. So the imagination is what your mind can do it. We are ready to give you the product for it. Okay. So this is my idea for the kitchen theme. Abhi sticker वगैरह बाद में लगाएंगे. This is the, I mean, almost it's done. I've kept it very simple. Okay. So, Anamika, were you doing dry brushing with the white paint? There is a question for you. हाँ बोलो. ड्राई ब्रशिंग किया आपने अभी व्हाइट कलर हाँ से. हाँ हाँ हाँ. दैट वाज व्हाइट, राइट? That was white, yeah. So I'll repeat the steps. First हमने brown किया था, उसके बाद white gesso. Then I had pasted the picture, and then started with darkest of the blue. The darkest I had is bohemian blue. Then I used some vintage blue and some mint to be. Okay. So once I ओके. was done with all the layers as like dry and all, अभी मुझे थोड़ा tone down करना है, तभी मैं white use करूंगी. Otherwise don't. सो आप अगर विंटेज जा रहे हो एंड इफ यू वांट अ लॉट ऑफ ब्राउन टू शो थ्रू देन यू प्रोबेबली डोंट नीड इट, और लॉट ऑफ कलर्स टू शो थ्रू. अगर आपको लग रहा है आपको शैबी शीक रूट जाना है, थोड़ा डल करना है, तो यू मे यूज व्हाइट, करेक्ट? Yeah. ओके. सो नाउ Now, बताइए, आप yeah, बताइए. I think I am just going to use some wax. Okay. So this is going to be a very simple page. This is more of a layering, just to give you guys an idea that again you are not restricted to napkins. We were getting a lot of comments कि हम आजकल napkins के live काफी कर रहे हैं, but it's a new product, इसीलिए हम napkin के live काफी कर रहे हैं. So here I'm trying to squeeze in a transfer for you all. So what I've done is again not a gessoed paper. I have put in some water and I'll just start dropping my, and great, I'll have to prick it. I'll have to break it. अच्छा, अगर और भी वो लाना है डार्किश शेड, तो आई हैव दिस patina ka paste, so that also you may use, because I am Yeah. total a vintage kind of a person, so हाँ. you may not you may not नहीं, like मैं it, but मेरे दिमाग में था कि हम लोग पटीना थोड़ा करेंगे, कुछ एक डेडिकेटेड ऐसा कुछ टू शो वो पीपल द पटीना ब्यूटी ऑफ पेस्ट से एक पटीना. डेडिकेटेड वाला करेंगे उस इसके बाद ना. हाँ, करेंगे करेंगे. आई थिंक दैट विल बी गुड फन. तो आई एम जस्ट oops 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 oops. I will just take away the excess. You can see how vibrant the colors are. Accidentally मैंने ज़्यादा डाल दिया. But I'm just scribbling some paint, not being too precise about it. I just need a background. Okay. And so now we are going to use transfers on this side. This is another kitchen or rather bakery themed transfer. This is our new launch. The transfer number is CTDTS 535. Name is Food Bakery. And this is how it looks. So it has two scenes of bakery, some baking ke quotes, and then baking karti hui ladki, and then all these elements. Okay. So you could have, use these kind of things on the decoupage also, or you could use our napkins also. The thing is we provide both the categories. आपको जो whatever works for you, right? So what I have done is same thing. Here I have shown you napkin on paper, and this I have shown you many times, so I'll not repeat the part. What I have done is मैंने अपने dual textured white. So we have a cardstock called dual textured white, which is very popular in card makers because it takes a lot of water. So that is what we suggest for transfers whenever you're using transfers. So I have transferred these transfers on that 250 GSM cardstock. So if you see, मैंने यहाँ भी सब transfer करके रखा है. I'm yet to cut all this. So this is our 250 GSM dual textured white. We have it in 250, 270 and 300. Right now it is available in 250 and 300. And then you can cut it out and do create, such kind of ephemeras.
So that is what I have done with these baking elements. Okay. Absolutely, Pradnya. वो उनका vintage is her forte. यस, पटीना नेक्स्ट करते हैं हम अनामिका, काफी लोग मांग रहे हैं कि पटीना का लाइव चाहिए. Done, done. So now what we are doing is we'll start creating a scene with these elements. Okay. So again guys, ये हम जो यहाँ कर रहे हैं आप डेकोपाज में भी कर सकते हो, but this is just an easier way to try out different things. So I prefer doing it on a diary, but you could always, do these kind of things. So I want this, then I'll take this. So last is a hint of golden wax. You can also use gold leaf. Okay. फिर आप स्टैम्पिंग वगैरह नहीं कर रहे हो आज? I think I'm going to leave it like this. I don't know. No stamping, Let's no see. stenciling. How come? Nee, I wanted it to be very simple. Only with the clay work, I wanted to create something. Right. Maybe later on, because आज तो नहीं हो पाएगा. Later on, I'm going to cover it up with your crackle paste, clear crackle Okay. paste, and then Right. highlight it with gold. So that will give a different effect. Right, right, right. So that is what my plan is. But वो live में नहीं कर पाएंगे. हाँ, Crackle is difficult to do in live, guys. So we have a lot of tutorials on how to use our Crackle paste. अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हमें always DM कर सकते हो and we will, help you out with links, etc. for the tutorials. I have done one live with Crackle, so we can also share that. But वो Crackle पहले से तो करके रखना ही पड़ेगा. We cannot do it live क्योंकि that needs to air dry. So it has limitation like resin. Or the problem is it doesn't work with heat tool also. Yeah, Otherwise, yeah, naturally I could आएगा. have हाँ I could have done it. But heat tool से वो खराब हो जाता है उसका इफेक्ट पूरा. राइट. कविता उन्होंने क्ले वर्क ऑलरेडी आज कर लिया था, सो शी हैड केप्ट इट रेडी. बट आपने तो प्रीवियस लाइव्स देखे हैं जहां पे उन्होंने एंड टू एंड किया है. सो गाइज देयर वर अदर सिंपलर लाइव्स वेयर शी हैज ऑलरेडी शोन यू हाउ यू कैन डू क्ले वर्क. For those of you who are new and don't know how to, do the clay with the molds, etc., she has already made a live. उसमें आप you can always see our previous lives to know how to do that. Again, all our previous lives are available on our YouTube channel. आप सीधा जाके वहां पे you can watch it. Okay, so now once my work is done, I am going to give थोड़ा सा यहाँ पे gold का touch. But before that, I am going to just put a coat of decoupage glue and varnish and seal it and then do it. Okay, so you are using varnish. Okay, नहीं अभी decoupage glue से पहले करना है उसके बाद right. varnish. ठीक है. So, for those of you who are interested in the dyes that I am using, so I'm going to use like 3 dyes over here. These are good dyes for any project. So that is why, I kind of removed 4 dyes, but I may skip one. So the dies that I'm using is, this is CrafTangles Decorative Circles, for which I'm using this one, frame wala. So इसको मैंने stack किया है. So these are actually 4 pieces of 250 GSM cut and then stacked to kind of create like a MDF thick piece. वैसा piece है. Then this is another die which is leaves die, again a CrafTangles one. So this has kind of ऐसा, it's a leaf and a skeleton leaf. And then these are 2 of my favorites. So these are crafted the dies. So these are the code numbers. If you search it with this code numbers, you'll find it. The name is called as honeycomb and linen.
Okay, and this is how it cuts. So this is that linen one, and this is the honeycomb. Again, these are cut out of 250 GSM dual textured. So I want to like create a simple scene, something like this, not like very lot of things going on. Very simple stuff I'm doing, which anybody can do. So pehle, before I do this, I'll do a little bit of stamping. For stamping, I'm using old newspaper, one of our favorite stamps, along with Versafine Onyx Black ink. This is CrafTangles 144. Vintage Peony. The Okay. stencil is called as Vintage Peony. Hi Disha. So this is what stamping I have done. अब हम फटाफट असेंबल करेंगे. तो असेंबलिंग के लिए मैं दोनों को इधर और ये भी इधर और इधर आई एम गोइंग टू यूज. ओके, सो आई विल जस्ट कट इट इन हाफ इन सम शेप just to create थोड़ा सा interest. Yeah, this I'll keep it like so. I'll do one here. Yeah. And then we are going to so I'm just creating some interest उसको टेढ़ा मेढ़ा काट के to kind of make it fun and not very straightforward. Disha, we don't have a physical store. It's purely an online store. You can place all the orders from our website, which is www.hndmd.com. I will add it in the caption. Hmm. Okay. Now you're adding some splatters Splatters, yeah. Some using dark which. colored splatters also, some gold and some dark brown. So you are using what products for that? Here I'm using chocolate syrup mixed with some umber, burnt umber, Hmm. and the other one is gold acrylic, normal gold acrylic. Okay. Okay. Uh, Disha, we do take workshops, but not a lot. If you are interested, join our WhatsApp group. We do tell people when we go live, we almost do free workshop every weekend. So, you can learn there and it's live. So you can ask your questions also for people who are new. Physical, we don't do a lot. As I said, we do a lot of purely online stuff. But we do physical like now and then, saal mein ek do baar. And Anamika here does physical classes, but not in Bombay, outside Bombay. She's in West Bengal.
Vinayak, or just check the same page, or you can check our YouTube channel. HNDMD is the name of the YouTube channel. आपको सारे videos उधर मिल जाएंगे. All videos that I'm talking about. HNDMD YouTube channel. So once everything is over, Kathy, what I plan to do is I plan to put a small clip like this and a small pad, so that if you want to put it up on your kitchen wall, you can actually Right, make right, right. Notepad just. make it work like a notepad. So that is Right. what my plan is. Let's see. Interesting. थैंक यू अनामिका बाय द वे फॉर बीइंग पेशेंट और मेरे साथ स्लो स्लो काम करने के लिए. Arey, come on, yeah, please. मेरी तो अभी दिल्ली थोड़ी और दूर है. Okay, so this is the varnish. I'm planning to put now the varnish. Absolutely, Vinay. We do a lot of tutorials. Again, we are a supply store, so we don't do a lot of paid classes. Rather, we do a lot of free classes. So you'll always learn something or the other. Can I get it? Oh, this will look nice. थैंक यू कविता. ये तो थोड़ा सिंपल है. आज मैं ज्यादा एफर्ट नहीं मार रही हूँ, बट आई वांट टू शो यू के सिंपल भी आप कर सकते हो. एंड दिस वन इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. जस्ट दो चार डाई कट, दो चार एलिमेंट्स, बैकग्राउंड वाटर कलर स्टैम्पिंग. दैट्स लाइक अ फुल प्रूफ प्लान. यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद दैट कॉम्बिनेशन. अब इसमें एज आई सेड मेरे को डायमेंशनल बनाना है, तो इसीलिए मैं कटआउट्स यूज करूंगी रैदर देन स्टिकर्स, क्योंकि मुझे थोड़ा हाइट चाहिए. So for that, I'm using CrafTangles Everyday Girls. These are die cut, so these are readily cut for you. All you have to do is remove and use. So again, I'll go with a girl who has a coffee and similar shades of clothes and stuff. I think इधर black अच्छा लगेगा, क्योंकि black stamping भी हमने किया है, तो she'll look good here. Yeah, I think I'm done. देखो आप आप. हाँ You tell me शांति now. से स्लोली स्लोली जूम करके दिखा दो पीपल को. फिर आप थोड़ा मेरे प्रोजेक्ट पे कमेंट्स मार देना देखते देखते. आज हम अनामिका को 1 घंटा लाइव में बिठा के ही छोड़ेंगे. हमने अरे प्रण लिया है. अरे ऐसा कुछ नहीं है. सो हाँ, आप एक बार अच्छे से आराम से उनको ज़ूम इन दिखा दो, सो दैट हाँ, दे I'll कैन just सी ऑल remove the द. camera या, and let me show. या, दे कैन सी ऑल द डिटेल्स. And guys, if you have any questions for her, please, feel free to ask her. This is the best time to get immediate answers, our lives. I'm unable to join your tutorials on your website. Join us. Have you created an account, Pranya, on the course website? If not, उसके logins अलग है from our shopping website. I think वो maximum लोग वही गलती करते हैं.
सो अगर वो किया है तो इश्यू नहीं होना चाहिए। वो करने के बाद भी इश्यू हो रहा है तो हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे पिंग कर देना। समबडी विल रिप्लाई टू योर क्वेरी। सो अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी आप अपना पलटी मार के चेहरा दिखा सकते हो अनामिका, एंड यू कैन कमेंट ऑन माय प्रोजेक्ट। आई एम आल्सो ऑलमोस्ट डन, लेट अस मेक इट मोर इंटरैक्टिव। आज आप होस्ट बनो और कमेंट मारो मेरे प्रोजेक्ट पे, और मैं प्रोजेक्ट बनाती हूँ, व्हाटएवर अरे इज बाप रे, लेफ्ट। आई थिंक दैट इज मोर डिफिकल्ट फॉर मी। आई एम एक्चुअली बेटर ऑफ इफ आई कीप क्वाइट एंड कीप वर्किंग। नहीं तो आप ऐसे कमेंट्री तो मारो, प्रोजेक्ट कैसा है, क्या है, थोड़ा लेट हाँ अस कीप नहीं, इट लाइवली। आई थिंक वी वांट टू सी दैट साइड ऑफ यू। आई बी अ बिग फेलियर इन दैट। You can also talk about BTS and K-dramas with us then. अरे वो भी मेरा Nothing आउट ऑफ else सिलेबस works. हो गया, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। आजकल मेरा भी आउट ऑफ सिलेबस ही चल रहा है, मैं बहुत कम देख रही हूँ टीवी इसके लिए। But otherwise, let me ask the audience whether they liked today's हाँ, treatment of the project. So that they should yes, tell me. Yeah. yes. Okay. Then Pradnya, just ping us on WhatsApp and we will answer your query. And guys, as Anamika asked, do let us know that you are liking today's decoupage project. Any feedback, any queries? क्या-क्या मतलब आपको कोई क्वेश्चन है डिकोपाज का? ऑलवेज Okay. लीव Thank फ्री। you, Kavita. Kavita has commented. The project is looking superb. Thank you so much. हाँ, नहीं वो तो बीच-बीच में चल ही रहा था, लोगों ने काफ़ी क्वेरीज़ भी पूछे, बट इट्स जस्ट दैट इट्स अ लॉन्ग वीकेंड नो, सो आई अज़्यूम लॉट ऑफ पीपल वेयर छुट्टी मना रहे होंगे। Yeah, चिट्ठी मनाने correct. हाँ, मेरा तो आज से एग्जाम चालू है because my son's exams have started from today. या Thank you, आया Paper Petals. Vinay saying, "Yes, it's good, ma'am." Paper Yeah, thank Petals you. 111 is saying, "It's Pragnya, beautiful, thank you so Pradnya." much. Absolutely loving it. सो हाँ, आई एम ऑल्सो डन विद बोथ द पेजेस। अभी मेरा थोड़ा फंकी पार्ट आ रहा है, तो आई एम होपिंग दिस विल बी फन ये फॉर राइट अनामिका वाला ऑल्सो। पेज आई लव्ड इट। अभी मैंने देखा एक्चुअली, ऑल दिस ये टाइम आई कैसा है? आई कुडंट इवन हाँ, सी। सो दैट्स व्हाई आई वाज़ सेइंग कि अभी आप कमेंट्री मारो कि मैं देख रही हूँ। एक्चुअली मेरा लैपटॉप सामने खुला है, तो मेरा हाँ, बिकॉज़ आई एम करेक्ट लुकिंग एट द करेक्ट, चैट, सो आई आई एम लुकिंग एक्चुअली एट बोथ द कुडंट सी। चैट्स। हाँ, सो दिस इज़ व्हाट आई मेड विद द नैपकिन। सो ये पूरा मैंने सब ब्यूटिफुल, फ्री हैंड किया। ये दैट फ्लैट ब्रिक वाला स्क्वायर थिंग नहीं इज होगा। लुकिंग लवली। थैंक यू। दिस इज़ वाटर कलर का पूरा वो ब्लरी इफ़ेक्ट, एंड ये मैंने अपना स्टिकर्स लगा के फ्लैट रखा है, और यहाँ पे ब्यूटिफुल। मैंने लेबल किया है। तो दिस इज़ ट्रांसफर्स जस्ट टू शो पीपल कि आप पेपर पे दोनों यूज़ कर सकते हो, और आजकल क्या हो गया, लोग बोलते हैं कि ट्रांसफर कम दिखा रहे हो, तो आई थॉट मैं एक-एक दिखा दूँगी किचन थीम में, देखते हैं वैसा। अगली बार, लेट्स लेट मी जस्ट प्लान टू यूज बोथ। या, Vinay या, is asking for molds, can we use air dry clay? Yes, yes. Vinay, यस, यस। I have used this is all. This is also a type of air dry clay. Within next 2-3 hours, it hardens. You can use हाँ, Sakura air dry clay also. Any sort of air dry clay is much. या। But what I like the feel is if the clay is a bit hard, then and hard I mean it's heavy. Then it gives a better view. Like Sakura में क्या होता है? Air dry clay is too light. So when you press it, it goes inside, so that is what sometimes you don't feel like हाँ अगर काम जल्दी करना है तो that type of an air dry clay is best. So वैसा you could air dry clay मेरा भी I also use lot of air dry clay. I use the regular one. So we sell all the things. We sell molded, we sell the regular air dry. I have always been using regular air dry, so इसीलिए मैं regular air dry use करती हूँ. I'm more comfortable with that. But I have heard rave reviews about molded, and I want to give it a try, but अब तक मेरे को वो मौका नहीं मिला है. Hopefully soon. Pragya is asking, ma'am, did you seal the paper before blending too? No, 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 no. no. See, You I have can do only that also, it won't be blended. an issue. See, you can See, use that. I know where to stop because I could make out the borderline, but if you are not confident about it, then seal it with decoupage glue and then do the blending. hmm. सो गिव मी 2 मिनट्स, मेरा भी सब खत्म ही हो रहा है, फिर मैं आपको ये पढ़ाऊँगी, बड़े ही कूल-कूल ये है।
पर ये क्या है, हिंदी में मुझे पढ़ने को थोड़ा टाइम लगता है, तो दो आई हैव टू सर्च। इवन दो आई हैव केप्ट देम रेडी, आई हैव टू सर्च। मैंने सोच के भी रखा था, पता है? बट वो, और ऐसे वो प्रेशर होता है ना लाइव का, तभी मुझे लगता है और हाँ, मेरा पोपट हो जाता है। मेरा हिंदी सोचो, टिल डेट आई आई कीप सेइंग मैं करता हूँ टाइप्स में, तो मतलब और भी हालत वो बुरा है तो मेरा। मेरा भी है, मतलब मेरा भी है, बट आई फील मेरा रीडिंग भी स्लो हो गया है। मैम पटीना के साथ लाइव नेक्स्ट टाइम, सो वी आर डूइंग नेक्स्ट टाइम पटीना लाइव। ठीक है, लेट लेट मी जस्ट प्लान। यस यस। आपको क्या है, आधे घंटे पहले लाइव प्लान कर लोगे, बन जाएगा। ऐसा नहीं मतलब है। मतलब फील तो वही आती है। आज तो मुझे लगा आधे घंटे में हो रहा है, मेरे को तो ऐसे शर्म आ गया था। मैंने बोला मेरा ये पेज भी नहीं हुआ, और वो बोल रहे मेरा हो गया। मैंने बोला क्या हो करूंगी मैं। इनफैक्ट सेम, I mean, on the similar color tone, I had made a bottle. Let me just show you, then you'll be able to understand the feel of it. Similar राइट। fashion में, I'll just get it made. ओके। So meanwhile, for those of you who are wondering, I am using our one of our very Indian launch, which is Hindi sentiments. These are Hindi journal sentiments, so they have all Hindi sentiment, and they have a lot of quirky sentiments. I feel which set us apart. क्या quirky sentiment है, ये 5 मिनट में मैं आपको पढ़ा के बताऊंगी। इफ यू कैन रीड, तो आपको समझ ही रहा होगा कि कैसा कॉमेडी पेज बना रही हूँ मैं। अच्छा, Kavita has timed it out 34 minutes and she was done. आई फील कविता और हम लोग ऐसे कंपटीशन में वी आर ऑलवेज लुकिंग के अनामिका और कितना जल्दी करेगी। वैसे I have not even, realized it कि 34 minutes में हो गया था मेरा। हाँ, वो हम लोग लिटरली बिटवीन अस इट्स अ रनिंग जोक कि अनामिका का और कितना फटाफट होएगा। सो कविता, थैंक यू फॉर काउंट कीपिंग द काउंट। See, this is the bottle on similar color shade. So या ऊपर वाला जो part है, so सो प्रिटी। सो दिस इज मिंट टू बी क्या? टॉप वाला आई थिंक मिंट टू बी है। या मिंट टू बी का ज्यादा है नीचे। एंड हियर आई हैव यूज्ड ये अपना लिक्विड एक्रिलिक ब्लैक थोड़ा सा। हाँ, लवली, वेरी प्रिटी। हाँ, वेरी कूल आइडिया। सी, वो अरे बोल नहीं, मुझे मुझे कविता, कंपटीशन नहीं करना है। क्या आपको कंपटीशन करना चाहिए? अरे नहीं, देयर इज नो कंपटीशन इन आर्ट यार, इट्स ओके। ऐसे कि झट से हो जाएगा, ऐसा मास्टर शेफ में होता है ना, सबसे पहले करके जो बैठ जाता है, वैसा आपको भी ऐसे सीधा पार हो गए फटाक से करके। गिव मी 5 मिनट्स, नहीं मीनवाइल नहीं, यू आप कैन आराम से कमेंट करो ऑन माय ख्याति, देयर इज प्रोजेक्ट। नो दिस थिंग, प्लीज डू इट। मैं भी थोड़ा थोड़ा अभी आई एम पुटिंग माय विंटेज गोल्ड प्रीमा का थोड़ा सा इधर उधर ना, थोड़ा सा। अच्छा, guys, as always, if you have any queries, this is the best हाँ, platform. यू कैन आस्क। यू कैन आस्क हर क्वेरीज, स्पेशली डेकोपाज। बहुत लोग है ना बाद में पूछते हैं, आई फील यहाँ पे आप पूछ लो, तो आपको हैंड टू हैंड आंसर्स मिल जाएंगे कि व्हाट शी थिंक्स, व्हाट आर हर आइडियाज, हाउ शी यूजेस इट। Thanks, Pragya. Thank you so much. Pragya is saying all your bottles are beautiful. So thank you so या, much. थैंक यू प्रज्ञा, सो स्वीट ऑफ यू। एंड सब आपके बॉटल सुंदर, ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, हाफ एंड हाफ, वेरी कूल आइडिया। बाय द वे, आई गॉट 6 बॉटल्स टू ट्राई। मैंने भी अरे वाह, बॉटल इकट्ठा कर ली फाइनली। पापा वेरी को गुड। बोला पापा को बोला ले आओ पापा, मुझे चाहिए। बेचारे अरे पापा आई ले टू आए। गो क्रेजी ना व्हेन आई गो टू, जैसे रास्ते में कहीं जाते हैं ना, तो वो कबाड़ी वाले का होता है ना, हाँ, हाँ। तो आई स्टॉप देयर एंड आई कीप वाचिंग कि भाई ये घर, माय हस्बैंड तो ये डिसलाइक्स इट सो मच। एक दिन बोला कि दिल्ली में थी तब, इधर ही तुम रह जाओ, फिर घर नहीं जाओ। आई वाज लाइक अरे यार ये बॉटल बड़े प्यारे हैं, ले लेते हैं हाँ, इससे। वही कबाड़ी वाला बोलेगा ऐसे लोगों के कारण ही मेरा बिज़नेस चल रहा है। अच्छा मैम, आप जैसे डीआईवायर्स रोज़ आए। अरे एक्चुअली वो जो सीताराम है ना लाजपत नगर में, हाँ, इन फ्रंट ऑफ दैट देर इज अ गाई हु सेल्स लवली बॉटल्स। ओके, हाँ, मैं मैंने उससे जाके भी लिया है, देखूँगी मतलब फिर। छोड़ा कुछ नहीं है। हाँ, मैं भी देखूँगी कभी जाके।
एक आखिरी कोट मिल जाए यार, जैसे मेरे को मोमोज का मिला, बट आई डोंट थिंक इट विल गो विद दिस। सो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट, बट आई कुड नॉट यूज इट हियर बिकॉज इट डजंट हैव मोमोज। वरना मेरा फेवरेट कोट है यहाँ पे मोमोज वाला एक। It seems you are in love with momos, huh? No, I used to eat quite a good amount of it after actually dating Gaurav because he is a Delhiite, no? So हाँ, he introduced me to momos. I was not, अच्छा, मतलब मैं तो बॉम्बे गुजराती वाली, मैं तो कभी मोमोज खाए ही नहीं थे। पर पता अच्छा, था मोमोज क्या होता है, बट खाए नहीं हाँ, थे। So he introduced me to momos and now I can eat, like I have adapted quite well to it. But मुझे अच्छा, वो फ्यूजन वाले मोमोज पसंद है। Plain I अच्छा। can eat, but not everywhere. वो मैं थोड़ा किचकिची हूँ, मतलब मेरे को अच्छा है दिल्ली मोमोज। में तो बहुत टाइप्स के मोमो मिलते हैं यार, कितना कुछ हाँ, बना दिया, तंदूरी मोमो, फ्राइड तंदूरी मोमो, मोमो, एग्ज़ैक्टली। हाँ, मलाई मोमो, पता नहीं क्या क्या डिफरेंट हाँ, टाइप्स। हाँ, तो वो बेसिकली वैसा ही है। तो मैं ऐसे, मेरे को वो पसंद है, ग्रेवी वाले मोमोज़ आते हैं, वो यहाँ पे भी इफ यू कम ना, महावीर नगर करके एक बहुत बड़ा ईटरी वाला एरिया है मेरे घर के पास। ओके, सो वहाँ पे यू देयर इज़ वन वेरी फेमस मोमो वाला, सो ही मेक्स इट इन ऑल काइंड्स ऑफ ग्रेवीज़, दैट्स ओके, माय फेवरेट। बट अच्छा, आफ्टर रिसेंटली लाइक द हेल्थ, मतलब क्वालिटी ऑफ मोमोज के ऊपर एक हाँ, आर्टिकल मैंने हाँ, पढ़ा था करेक्ट, करेक्ट, कि करेक्ट, इट्स नॉट लाइक इट्स मिक्स्ड विथ ऑल द डर्ट स्टफ बिकॉज वेयर यस, दे मेक इट एंड द वाटर दे यूज इट और ऑल दैट। उसके बाद राइट। से मैंने मोमोज छोड़ दिए। तो अभी मोमोज पेपर पे ही दिखते हैं खाने में तो दिखते ही नहीं इसके लिए। चॉपिंग बोर्ड कलर मर्जिंग इज टू गुड मैम, नो वर्ड्स फॉर दैट। थैंक यू सो द मच। गोल्ड एडिशन इज सुपर्ब। हाय कंचन, नूडल्स भी भर देते हैं। हाँ हाँ, नूडल्स वाले चाइनीज मोमोज भी आते हैं। So thanks, Kanchan. So this is my first page. Sorry, rather than I start from here, this is my first page. ये हमारा napkin challenge था. She used a napkin in decoupage. I used it on a journaling. And अभी मैं comment, I want you to read the quotes. So what this says is, we desi, वी आर देसी वैसा, चाय कॉफी पे तो दुनिया जाती है, तुम मेरे साथ गोलगप्पे खाने जाना। सो दिस इज लाइक, चाय कॉफी पे दुनिया डेट पे जाती है, तुम मेरे साथ गोलगप्पे खाने वाली डेट पे आना। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट कोट दैट आई वांटेड टू यूज। एंड देन इट सेज, मुझे तो तेरी लाटे लग गई। सो लत लग गई की जगह लाटे हाँ, लग गई। लाते इट हैज आओ लॉट ऑफ नहीं। लाइक quirky quotes which I really enjoy. And then this one, so this is a flat one. So if you see, यहाँ पे मैंने कोई dimension नहीं डाला, only stickers and napkins, very flat. Okay, for those of you who are traveling and all that. And ये मैंने, I went like, this is my favorite style, layering and all that. So here I started with liquid watercolors, stamping किया इधर उधर। ये हमारा transfer है. Just to show you guys what I'm talking about. दिस इज द ट्रांसफर। इसके ये सब एलिमेंट्स मैंने यहाँ यूज किए एज अ कटआउट ऑन अ पेपर। ब्यूटिफुल। So this is how I transfer it on a paper and then I fussy cut it out to kind of use it as an element. So these are 250 GSM dual textured white cards. So it has this kind of thickness. They look like ephemeras. And that is what I used here. And then मैंने die cuts किया है। तो dies के लिए I have used ornamental circles. Sorry, decorative circles. This is our die, which is CTSD 38 CrafTangles die. I was going to use this, but ये मेरे design में leaves बैठा नहीं, so I kind of cancelled it out. And then these two are crafted dies. So these are the codes of the dies that I have used. For those of you who are wondering, so ये सब मैंने इधर उधर थोड़ा kind of to break the design and all that, add interest, वो सब सिर्फ चिपका है white paper से, doing nothing. So काफी simple ही रखा है. This came out in like half an hour, half an hour. So you can do journaling almost daily if you have a little bit of time. Trust me, this is very therapeutic. And इधर मैंने लिखा है, so this girl is from ये भी हमारे रेडीमेड कटआउट्स है. This is our first made in India die cut. ये, and as you see, it hardly has any borders, so very seamless.
ये यूज किया है मैंने, इसमें और आने वाले हैं गाइस, वी आर वर्किंग ऑन इट, अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन आस्किंग। सो ये लड़की वो मैंने फोम टेप पे लगाई है, एंड देन मैंने स्टिकर्स लगाया है। सो स्टिकर सेज अपना वाइब ही अलग है, उफ तेरी अदा, एंड देन एक कड़क चाय, बिकॉज दिस इज लाइक अ चाय एंड बन्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो मैंने चाय वाला एक लिया, मुझे एक्चुअली मोमोज वाला करना था एज आई सेड, बट अनफॉर्चुनेटली मोमोज वाला कुछ था नहीं। मैं पढ़ा थी तुम्हें मोमोज वाला, वापस मैंने घुमा दिया। मैं बोलती हूँ ना, हिंदी वाले मुझे ढूंढने को बहुत टाइम लग जाता है यार, इट इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ, सी मोमोज आर हार्मफुल फॉर हेल्थ, लेकिन वो प्यार ही क्या जिसमें दर्द ना हो। आई वॉन्टेड टू यूज दिस, बट वो मोमोज नहीं थे, तो आई काइंड ऑफ रिफ्रेन्ड, तो मे बी इन सम अदर वन। So these are our Hindi sentiments. Personally, one of my favorite stickers ever. So yeah, this was in journaling, and that's decoupage using napkin transfers. So आप कुछ भी कर सकते हो. It all depends on ideas. Thank you, Vinayak, or thank you. So I hope you don't have any questions for us. आप भी अनामिका अपना चेहरा में दिखा सकते हो. Are you comfortable changing the settings and all that? Yeah, yeah. I think it should flip now. Now I know thoda thoda. हाँ. Let me see. Uh, तो हाँ, सेटिंग्स में Aya? Yeah. आया Yeah. ना? अभी आदत पड़ Yeah. गई ना, सो दिस इज Yeah. कंफर्टेबल फॉर यू नाउ ना? Yeah, yeah, yeah. इट्स जस्ट Absolutely. दैट विथ यू आई हैव टू वर्क अंडर प्रेशर ऑफ दैट 1 आवर। नहीं नहीं प्लीज, अगली बार से मैं और भी धीरे धीरे काम मैं करूंगी। आप मतलब मुझे ऐसा लग रहा होगा 15 मिनट से, लास्ट 15 मिनट से सोच रहे हो यार ये कब खत्म करेगी? नहीं कब नहीं मेरा आई वाज प्रोजेक्ट हो गया, ये कब खत्म नहीं करेगी? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आई वॉज मोर कंसर्न अबाउट वेदर टू एड एनीथिंग टू माई प्रोजेक्ट और राइट, नॉट। राइट। नहीं, नहीं। अदरवाइज आपका ऐसा सिंगल माइंडेड फोकस में इतना फटाफट प्रोजेक्ट है, ट्रस्ट मी, लाइक शी सेड लेट्स डू प्रोजेक्ट टुगेदर, एंड माय फर्स्ट थिंग वाज आई एम नॉट डूइंग डिकोपाज और मिक्स्ड मीडिया विद यू, कि मुझे 2 घंटे लगेंगे, आपका 40 मिनट्स में खत्म हो जाएगा। कोई टाइमिंग का मेल ही नहीं माय बैठेगा। गॉड। यू रिमेंबर वी सेड, आई यस टोल्ड यू द सेम यस थिंग। यस आई यस। टोल्ड हर कि हम मैं जर्नलिंग करूंगी, दैट्स माय कंफर्ट जोन, मेरा वो 1 घंटे में हो जाएगा। सो वी विल डू समथिंग लाइक दैट, वैसा। बट आई होप गाइज यू एंजॉयड, हमने आज कुछ अलग तरीके से मजे किए। आई होप यू एंजॉयड बोथ द प्रोजेक्ट्स, एंड मेजरली इट गेव यू सम आइडियाज ऑन हाउ यू कैन यूज डिफरेंट प्रोडक्ट्स। आई फील वो हमारा लाइफ का सबसे मेन मोटो रहता है, सारे लाइफ्स का। मेरे को कविता बोल रही है उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया विथ वार्निश ऑल्सो, और तुम्हारा 2 जर्नल पेज में स्ट्रगल हो रहा था। नहीं अभी नहीं क्या ऐसा करें? कुछ अब क्या करें कविता, ऐसे ही है हम। हमारे नींद में नहीं कर पाते हम, इतना टैलेंट अनामिका नहीं के नहीं पास ऐसा नहीं है। कुछ नहीं है। ख्याति इट इज जस्ट दैट हो जाता है और ऑफ कुछ कोर्स नहीं। विद एक्सपीरियंस वैसा है। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर जैक ऑफ ऑल गाइस। तेरी तरह। सो बिकम किंग ऑफ वन लाइक अनामिका। डोंट बी नहीं नहीं जैक ऑफ ऑल लाइक मी। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अपना अपना you should enjoy the process, that's it, whether you are doing it speed, it doesn't matter आई फील actually. इट्स अबाउट नेचर। में तो अभी वही आजकल मैं रेजिन कर रही हूँ ना, सो आई शो यू वन सैंपल ऑफ रेजिन। तो दिस इज द रेजिन लॉकेट दैट आई मेड। ऐसा अरे वाह। ऐसा भी इसका बाकी है करना वगैरह, बट यू विल सी ऑल दीज ट्यूटोरियल्स कमिंग सून, क्योंकि आजकल मैं ऐसा रेजिन सीख रही हूँ। वो भी मैंने 1 हफ्ता किया, आज लाइक अभी मैं बोर हो गई, अभी मेरे को कुछ और प्रोजेक्ट करना है। सो वो नेचर इंसान का कैसा है, मतलब मैं तो बोर हो जाती हूँ बड़े जल्दी, वो मेरा प्रॉब्लम है। सो मैंने ऐसे लॉकेट्स बनाए, ऐसे चार्म्स अरे वगैरह दिस इज लगा के। वेरी प्रिटी, वेरी सो नाइस। दिस इज पिंक, ओह सॉरी, so this is pink, ऐसे चार्म्स लगा के, एंड देन दिस इज ऑल वर्क इन प्रोग्रेस। अरे वाह। तो मैं मेरे राखी के लिए, मेरे कजिन्स के लिए भी बना रही हूँ, तो वो सब चल रहा है, और आई थॉट आई शूट द रील ऑफ माय प्रोसेस आल्सो, ऐसा। वेरी नाइस। So see, everybody is saying want to be like you. Anamika ma'am is an inspiration. Yes. I'll show you what I was working on. So I this is the, एक मिनट फिर से मुझे वो करना पड़ेगा ना। Ah, so Pranya is saying today you guys made what you are best at. Yes, because as I said, time.
आज कितना जल्दी ऐसा देखा है, 5 बजे प्रोजेक्ट खत्म हो गया, हम बात कर रहे हैं, वरना हम तो 5:30 तक प्रोजेक्ट ही कर रहे होते हैं। आ रहा है क्या ख्याति? नहीं नहीं, ना? अभी अभी ऊपर ही है। आपको वो कैमरा में फ्रंट कैमरा की जगह कर बैक कैमरा, वो हाँ, ड्रॉप मेरा डाउन फ्रंट है। था ना, वो बैक हाँ, कर दिया मैंने, बट समथिंग इज इट इज स्टिल मूविंग इन सर्कल, सो मे बी नेट कनेक्शन इज स्लो और समथिंग। ओके। आपको ऐसे लेवलिंग में रखा है क्या रेज़िन वाला? हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड। बड़ा स्ट्रगल होता है रेज़िन का लेवलिंग। रेजिन में मूवमेंट इज अ बिग इशू यार। माय रूम दिस टाइम ना, द प्रीवियस रूम वाज बिग एक्चुअली, तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता। ये दिस रूम इज अ बिट स्मॉल, और इतना राइट, सामान भरा हुआ है ना, तो इट्स डिफिकल्ट। तो वो कोई फेंकने का मन भी नहीं करता ना, कचरा उठा के रख देती हूँ, दैट इज द प्रॉब्लम। नहीं, वो दैट इज द रेज़िन बहुत जगह चाहिए। मैं भी अभी कर रही हूँ ना, तो ऐसे मैं सब ऐसे कोनों-कोनों में रख देती हूँ रेज़िन, क्योंकि पैर में आएगा तो भी खराब हो जाएगा। इट नीड्स वन डे। ओके, आई थिंक Anamika went. Okay, I don't know. She had some issue probably. We'll give her a minute. But anyways, guys, what I was saying is these all tutorials are coming your way. We are also launching something exciting, so stay tuned for all these stuff. And yes, आज हमने अनामिका आई, just let me add her. वीडियो फीड नहीं ऑन है उनका, हो रहा है। ओके, हो गया। क्या? So this is what we made today. आ गए, आप आ गए। हाँ, वो कुछ आई डोंट नो, समथिंग वेंट रॉन्ग। Yeah, let's not break what's working. हम नहीं हाँ, और आई कीड़े नो। करते कैमरा के या साथ। या We'll इट इज see शोइंग next time. अनेबल टू एक्सेस द कैमरा, सो लेट इट बी Yeah. बाबा, बाकी सब चला जाएगा फिर। ट्रू ट्रू ट्रू। सो गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। एज आज हमने दो तरीके के प्रोजेक्ट दिखाए। नेक्स्ट वीक वी विल बी जॉइनिंग अगेन। नेक्स्ट वीक मे बी अनामिका विल मेक अ प्रोजेक्ट एंड आई विल बी अ होस्ट नॉर्मली, या लेट्स सी, विल डू इट, आई डोंट नो। सोचते हैं हम, बात करेंगे आपस में और कुछ डिसाइड करेंगे। बट डन। you guys prefer Instagram or YouTube, Facebook? Let us know. I think I'll do a poll probably on Instagram to see what you guys are seeing. बट इंस्टाग्राम वाले इंस्टाग्राम ही डालेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम का पोल हो जाएगा। सो डू लेट अस नो के यू वांट यूट्यूब और फेसबुक और द इंस्टाग्राम स्टाइल, वट एवर यू वांट, वील डू दैट। एंड यस, नेक्स्ट लाइव पटीना पक्का है। वेदर वन पर्सन इज डूइंग इट और टू पर्सन इज डूइंग इट, वो हम प्लान करते हैं। एंड या, इट वाज फन टुडे अनामिका, आई होप यू एंजॉयड। आपको थैंक ऐसे यू। स्लो स्पीड में थैंक काम यू। करके आई कुछ नया शो द एक्सपीरियंस मिला। शो द अच्छा, ये वंस मोर। हाँ, विल वेट फॉर द रील ऑल्सो लाइट में, ताकि आप लोग देख या सको, बट लाइट दिस में इज द अच्छा लगेगा। क्लोजअप। या या, आप जब वो नोटपैड वाला लगा लोगे फिर। ओके, एफबी, a lot of people are YouTube FB only, so we'll try that, Anamika, if next week also you want to do that. ठीक है। Okay, we'll take a call. ठीक है, Okay, डन। so thank you guys, thank you for staying here. Thank you, Anamika, for a lovely project and lot of tips and tricks along the way. And thank you स्लो काम करने के लिए। अरे प्लीज, एनी and I टाइम। and I hope you enjoyed. Change the यस, setting to be एब्सोल्युटली। little zoom. हाँ। नहीं, वो नो फ्रंट नो, आई कैमरा है एम ना फाइन। उनका। या, नहीं, वही उनका एक्चुअली, वो बहुत लोगों को लगता है कि मेरा, बट मेरा एक्चुअली एक फोन लगा है और एक SLR लगा है। मेरा पूरा सेटअप होता है, इसके लिए मैं तो वही यूज करती हूँ। इसके लिए मेरा अलग है कि मैं दूर बैठी हूँ, बट वो हाँ, नॉर्मली फ्रंट कैम ऐसे ही चलेगा। इसके लिए। सो थैंक यू अनामिका, वी हैड फन, एंड या, विल सी यू सून एंड विल वेट फॉर द रील। शी वेंट अगेन। So thank you both. Thank you everybody for being here. I think Anamika unfortunately broke again due to internet connection. We'll see you soon, guys. Next week we'll see you with another live, mostly Friday, same time, same the next week, Friday 4 p.m. Okay. Thank you guys. Thank you everybody for being here, and happy